हेलो स्टूडेंट्स क्लास 12 पिला माने मन देख सुनिबो क्लास 12 सीबीएसई पिला माने पढछ सीबीएसई रो वॉल्यूम 2 ओके लाइट चैप्टर माने रे ऑफ टेक्स्ट रो हमें डिस्कस करिवा मिरर फार्मूला राइट। तो मिरर फार्मूला कोन मिरर आउ तारा केमिति डेरिवेशन कंप्लीटली होची मिरर कनकेव मिरर आउ कन्वेक्स मिरर राइट। तो मिरर फार्मूला हम डिस्कस करिया फर्स्ट देखो। तो मिरर फार्मूला डिस्कस करिया बरो ठीक बेसिक जिंस जानिया दरकार फर्स्ट। तो ये जो 1/v 1/u 1/f तो v कौन v होची कौन इमेज डिस्टेंस और u होची ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज ए फोकल लेंथ राइट। तो v इमेज डिस्टेंस u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f है फोकल लेंथ। तो आम कनकेव मिरर रे जदि हम डिस्कस करूचे कनकेव मिरर रे तो एठी मु फर्स्ट कनकेव मिरर देखि कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर रे इमेज फॉर्मेशन तो तबे सब जानि छ प्रीवियस रे जानि थबो। तो जदि न जानि छ ताले कोन देखिबो मोर YouTube चैनल देखिबो तार गोटे जो थीबो मिरर फार्मूला कंप्लीटली लाइट चैप्टर थीबो 10th क्लास में थीबो देखिबो सेटा कंप्लीटली तार सब तो इमेज फॉर्मेशन बुझेइ छी हला। देन एथन गोटे पीस करबे जति को इमेज फॉर्मेशन अछि कोठी कनकेव मिरर रे आठ इनफिनिट ऑब्जेक्ट रहला इमेज कोड होछि आठ सी रहला इमेज कोड रहछि बियॉन्ड सी रहला इमेज कोड रहछि बिटवीन सी एंड एफ इमेज कोड रहछि आठ फोकस इमेज कोड रहछि। Then image between P and A, object and pole and object of pole भितरे हला that means focus and pole भितरे जति ऑब्जेक्ट रहुची ताहाले तार इमेज टा कोड आसीबो सेटा भी देखिबा। तो को जगह रियल और वर्चुअल आमे केवल एठी डिस्कस करिबा दीटा कथा गोटे डिस्कस करिबा वर्चुअल और गोटे रियल और वर्चुअल और तीनटा पिक्चर डायग्राम हो बुझी परछो बोर्ड देखा जाउची बस ए तीनटा पिक्चर रे हम डिस्कस करिया गोटे कथा ओके मु टिके ऊपर को बोर्ड लिखि दउची इमेज टा अटे छोट जगह होबनी। तो एठी गोटे देन गोटे कन्वेक्स लिखिबी ओके बोर्ड देखा जाउची गोटे हाँ कन्वेक्स अच्छी नहीं कन्वेक्स कथि लिख दो कनकेव दुईटा कन्वेक्स गोटे कर गोटे वर्चुअल गोटे इरेक्ट गोटे ओके। तो एठी राइट तो दुईटा केस नवा गोटे नवा रियल एटा सी दिस इज योर एफ this is your object beyond this line and focus and this is your what this is your C, this is your F. Then if object is here then focus okay then pole then dotted line okay। तो ये इमेज फॉर्मेशन दिस इज योर इमेज दिस इज ऑब्जेक्ट दिस इज योर एफ दिस इज सी दिस इज ए बी ए डैश बी डैश दिस इज योर concave mirror this is also concave mirror this is a concave mirror। concave mirror दुईटा केस देख डायग्राम करली गोटे रियल गोटे वर्चुअल और गोटे कन्वेक्स ओके। कन्वेक्स रे इमेज फॉर्मेशन any position okay parallel then focus C image formation this one
Okay, this is your image formation. This is your A, this is your B, this is your A dash, this is your B dash. Clear? Okay, diagram बहुत important. Diagram बहुत main होचे. Okay, तम भाई बहुत important diagram. तो सेठी पाई diagram ठीक से diagram draw करवा दरकार. तो ओके, तो ये एरो मार्क बस बर्तन इमेज फॉर्मेशन हम एठी तो गोटे पोल जाओ बा फोकस जाओ जल्दी हो. This is A, B, A dash, B dash. This is the image. Object is beyond C. Beyond C. जदि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहा है जदि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहा मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर आगो रहबो राइट ताहले ता इमेजटा बिटवीन सी एंड एफ हो जदि बिटवीन सी एंड एफ होला ताले कोन होला ताले इमेजटा छोटो आसीबो. ओके, पिक्चर देखा जाउ ठीक है. तो एठी तमर देख ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी एंड इमेज इज फाउंड बिटवीन सी एंड एफ एंड दिस इज अ कॉन्केव मिरर. एक केस हम सॉल्व करबा जेडा फॉर्मूला ए मिरर फॉर्मूला काम करछ ना नहीं. देन एठी से डिस्कस करबा जे एडी इमेजटा होछि एडी इमेज रियल इमेज. दिस इज ए रियल इमेज. ओके, सो दिस इज a real image. So this is a real image. Next one, this is a real image. A real image. Okay, this is a virtual image. Virtual image. এই virtual image रे ମୁଁ ଯେହେତୁ ସ୍ପେସ୍ ବହୁତ ଅଛି ତାକୁ ସ୍ପେସ୍ ଦେଖିକି କରୁଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ହେଲା ଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଟକଟ୍ କରିବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହେଲା. जोड़े ट्रायंगल अच्छे जोड़ाक जो पार्टा करेबी 10th लेवल रो जो पार्टा अच्छे जो ट्रायंगल रो सिमिलरिटी ट्रायंगल जोड़ा हम खाली कहि देबे तुम बुझि परबे केते देखो. दिस इज 90 राइट, दिस इज 90, दिस इज 90. तो बिटवीन दिस टू ट्रायंगल इन ट्रायंगल A B P, this is your pole, this is your pole, same naming. Okay, and this is your pole, this is your convex. Okay, this is your pole. Okay, arrow mark is the carefully put arrow mark. And this is your A B P and A dash B dash P in this two triangle. Okay, by A similarity, triangle A B P is similar to A dash B dash P. Similarity माने दिरा triangle जदि angle रा same थिबो या 90 90 अछि बाकी these two angle are equal, that's why the two triangles are similar to each other. Okay, so the ratios are also equal. So AB by A dash B dash BP by B dash B AP by A dash P. Okay, AB by A dash B dash, BP by B dash B, AP by A dash P. Okay, so now you check. Suppose here AP, you know AP. Okay, AP here I will write here AP. Okay, one part I will write here AP is equal to AP is equal to object distance, that is equal to U. Okay, so AP is equal to, that is equal to what, minus U, and AP A dash P also minus V, right, and PF minus F, and
B dash P no need, okay, only you need A dash B AP bus. Then in this case, so that is equal to AP, what is AP, simply remember that is equal to AB by A dash B dash BP no need, that is equal to AP means minus U by A dash B means minus B, that is equal to U by V, okay. So this is your equation 1, clear? Then in triangle, same thing we have to check here. Let us check ABP and A dash B dash P, okay. So in this case, this angle is equal to this angle, because these two angles equal, and this is also 90, this is also 90, right? The vertical opposite angle and also angle at the pole, okay. These three angles are equal, this and this, right? So by a similarity, here same thing is also in the figure, this and this, in both the figure it is working also. How? Look at here, AB by A dash B dash, AB by A dash. In the triangle, here same thing, in triangle ABP and A dash B dash P. So AB by A dash B dash, same thing, AB by A dash B dash, AP by A dash P. So here in this case, ABP, triangle ABP is similar to A dash B dash P. So AB by A dash B dash is equal to BP by B dash P is equal to AP by A dash P, okay. So same thing here, BP, how much BP, no need, directly I can write here AP by A dash B, and AP is equal to what? AP means here AP, object distance, that is minus U, A dash P, okay, that is plus V, and that is equal to, finished, same thing, but here this is U by V, okay. बोर्ड देखा जाउछि ठीक से, पूरा केयरफुल स्टेप बाय स्टेप चेक करो, ओके। खाता पकाओ, लिखो, हला खाता लिखलो बस। एटा होछि फिगर 3 रे सेम इन ट्रायंगल सेम एस ABP is similar to A dash B dash P, A dash B dash P, A dash B dash P, here ABP, A dash B dash P, like that. Look at here, ABP and A dash B dash P, A dash B dash P or A dash B dash F, okay. So तीनटा का पिक्चर देखो, सब देखो पिक्चर ठीक से आसुचे। तो तीनटा का पिक्चर जहाँ आसो A dash B dash P और ABP, तीनटा करो सेम रूल आसो। A dash B dash P and ABP देखो A dash B dash, ओके। तो जदि हम लिखुचे A dash B dash ABP and A dash B dash P, ओके। तो इथे हम लिखुचे A dash B dash P रे जदि हम लिखुचे एटा कोन अछि ना तमरो दुईटा को केस हला, ध्यान दी देखो भले कि बोर्ड को चाहो ठीक तक देखाओ छ नहीं, टाइम लगे भले कि चेक करो फटला। तो एठी से ABP and A dash B dash P, ABP and A dash B dash P, ओके। तो A dash B dash P लिखा ने ए जो AB by A dash B dash is equal to AP by A dash P. So that is equal to how much? AP, all the distance minus U, A dash P, this is equal to plus V, okay. This is equation 1. Right away, equation 1. That is equation 1. Here also equation 1. So similarly, in triangle, let us consider this your K, okay. ये जो K है ना, देखो अपर्चर यदि जो अपर्चर टा बेंडिंग हम ये अर्थ ध्यान देखाओ छी, इटी अर्थ पर देखाओ छी बोटा, रेडी, बस। तो सेठी ये अपर्चर रे
এই যে পার্টটা আছে না এই পার্টটা এই যে পার্টটা ছোট পিসটা নেবি না এই ছোট পিসটা স্ট্রেট লাইন में লাগিব ओके नहीं तो सेति पई एटा को जेतो अपर्चर स्मॉल अपर्चर अछि सो दैट इज व्हाई दैट kp ओके so kp is considered as a straight line that and that kp is equal to approximately equal to in triangle kpf okay in triangle ab in triangle a dash b dash and ab a dash b dash f and kpf okay because since kp is nearly equal to ab right that is why so you consider so a dash b dash f is similar to kpf so kp so kp by a dash b dash equal to kp by a dash b dash okay kp by a dash b dash is equal to pf by b dash f pf by b dash f pf no wrong here a dash b dash f then kpf okay then a dash b dash f and kpf so kp by a dash b dash then pf by b dash f wait out key that is pf wrong pf this is a dash b dash f so pk eta pkf okay that is equal to pkf carefully रखो that is equal to pkf ए नाम रखने जो आन लिखा है ना आन रे नाम लिखले उल्टे चलेगा तो एट लिखने उल्टे तो a dash b dash by pk that is equal to pk and pf a dash b dash by pk then b dash f kp that is equal to kp that is equal to b dash f kf by kf this is equal to kf by b dash f and is equal to a dash f divided by a dash f divided by pf okay very carefully pf तो ट्रायंगल रो सिमिलरिटी पूरा क्लियर जाय देखो a dash b dash p तो समझे a जो स्टार्ट होला तो इट समझे तार को तल डाउन स्टार्ट हो p k ए जो पार्ट था एटा भाबी दियो तुम इमेजिन करो जे एटा कहां से इक्वल कैपिटा ab से इक्वल राइट तो सही हिसाब रे हम तुमको यदि सही पिक्चर को शो करेंगे तो एठी हमरा छोटा ट्रायंगल है ना तो ए जो ट्रायंगल का मार्क करो दिस स्मॉल ट्रायंगल राइट and this small triangle okay this small triangle right this small triangle okay and this small triangle sir okay देखा जाচ্ছে टिके तो एबे से ठीक दिखाला एठी ठीक से एठी सेमती ये जोले पिक्चर हैला तापरे आउट पिक्चर हैला हम देखै छी यार a dash b dash f kpf a dash b dash f here a dash b dash f and kpf this is equal to kp right तो kpf and a dash b dash f पूरा कैपिटल धरि अछि जो पिक्चर हला तो दीटा ट्रायंगल अछि एठी मार्क करो kpf पूरा kpf टा तमे क्लियरली कैच करियो तार नाले जानि परियो नाही तो kpf पूरा पिक्चर टा kpf रो देखा जाछि this is your kpf और पूराटा a dash simply a dash b dash f okay and f this one is look at here this is your a dash b dash f right a dash b dash f okay हम डिस्कस करियो टोटली okay धीरे जीवा तो एबे असला kp pk by a dash b dash by kf by b dash now pk means the ab no so that is equal to
AB by A dash, so you can write here AB by A dash B dash is equal to KF. KF तो करने वाला इधर कर A dash F means A dash F means a P A dash P minus PF तो A dash P means image distance, that is minus B. PF means minus of F. Okay, so that is equal to F minus B. Okay, F minus B. So finally F minus B by B dash F तो करने, so PF means small f focal length, that is minus small f. Okay, so this is your F minus B by this one. So this is your equation. This is equation 1. This is equation 2. So space is there. तो टिके स्पेस ना स्पेस. ओके, स्पेस देखा वाला ठीक से. हाँ, तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का सेटिंग करिवा मो अब गोटे पार्ट सर्च करछि हला. तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 रे असले लिखला कोन असला, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू u by v is equal to f minus b by minus f. तो minus fu is equal to vf minus fv. This is u by v. This is equal to u by v. This is equal to f minus b a dash f is equal to a dash p, that is v minus b minus of plus f minus b, the f minus b. So this is equal to bf minus b square. Okay, so এটা দেখা গলা, इनको देखा जाओ सब लिखा पड़ियो. देखियो एटा पहुंचे एटा 20 क्लास पर मिस्टेक हेछि. हम देखियो एटा चेक करबा टिके. PK by A dash B dash, correct. Then KF by B dash F, you will correct. Then PF, oh it all teach. This is your PF. This is your PF divided by PF by A dash F. Now it will be correct. A dash F. So now A dash F KF PF minus F all together, just all together, right? So this is equal to A dash F, that is equal to a PF minus F divided by F minus B, correct? So this will be minus F, this will be minus F, and this will be F minus B. So finally it will be what? This will be FB minus FB, that will be UF minus UV. So that implies minus F by V by UVF, UF by UVF minus UV by UVF. Dividing to both sides UVF. यदि हम UVF डिवाइड करिबा तो असला कोन ना फाइनल स्टेप रे FF कैंसिल, VV cancel, this is equal to minus 1 by U equal to U cancel, FF cancel, 1 by V minus, so U cancel, VV cancel, minus 1 by F. Clear? So now final step will come what? Final step, that is equal to 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. Clear? ये है ना हमारा फॉर्मूला. माने ए पिक्चर रे प्रूफटा हे गला. तो सेम प्रोसीजर रे तमे एटा को ट्रायंगल करबा, हम एटा भी करबा. मु गोटे पिक्चर कर दोछि बोली बस करके एटा को स्पेस नहीं हला एटा देखिए. ओके, बोर्ड देखा गला, फटाफट नोट करो आ तो कहि देबे, हमको एक्सप्लेन कर देबे केनते हला. ओके, तो एठी
देखो दीटा ट्रायंगल चूज करियो वो ठीक से देखो सी गोटे ला ABP and A dash B dash P ABP and A dash B dash P तो ABP और A dash B dash P लिखी छी ना ABP and A dash B dash P this is your ABP and this is your A dash B dash P clear तो this is your A dash B dash P okay so this is ABP and A dash B dash P ABP A dash B dash P this one okay so this one is A dash B dash P is that angle okay by in this triangle we got first equation similarly A dash B dash F is small one and this one AB माने तो KP है ना तो ये KPF A dash B dash एमती ट्रायंगल वाला है एंतो ट्रायंगल अछि एमती अछि एंतो अछि पूरा बॉर्डर ट्रायंगल वाला बने एटा इधर ट्रायंगल है राइट एटा तमरा K अछि एटा तमरा P अछि एटा तमरा A अछि A dash अछि this is your B dash this is your F एमती ट्रायंगल वाला बुझलो ए इधर ट्रायंगल है तुम देखो कौन सिमिलरिटी करियो तो दिटा इक्वेशन वाला तो ये पेयर फर्स्ट इक्वेशन सेकंड पेयर ऑफ ट्रायंगल है सेकंड इक्वेशन देन बाय कंपेयरिंग दोस इक्वेशन फाइनली वी गेट दिस वन ओके बुझियो एब नोट करो तापर मैं वाश करके सेकंड पार्ट को सेकंड पिक्चर देखिए ओके हैला सेकंड पिक्चर देखो सेकंड पिक्चर को आउछ सेम एडीएस इक्वेशन 2 आसला इक्वेशन 2 आसीबो A dash B dash and A B this one ABP A dash B dash P then आसीबो कोन this is equal to एटा के देजो ना के KP A dash AB ABP और KPA okay this triangle so KPA and KPA and A dash and B dash A B dash A dash A dash KPA A okay therefore KPA triangle is similar to triangle KP B dash this is equal to eta A tha na this is equal to AB then A dash B dash okay so K this is your KPA then B dash A B dash A dash B dash A dash A B dash A dash KPA B dash A dash also A okay so KP by B dash A dash PA by PA by A dash PA by A dash B PA by A dash A okay then KP PA then KA by B dash A okay B dash A so that is equal to PA means PA that is equal to minus U by A dash A means that is equal to AP plus P dash A AP means U minus U plus minus U this is equal to A KPF ना KPF पहले এটা KPF sorry এটা KPF रे काम करबो ना KPA नहीं KPF A dash B dash F so KP A dash B dash PF by A dash F PF by A dash F then KF by B dash F
b dash f. Now pf that is equal to pf is equal to small f pf and a dash f okay, a dash f image distance, a dash f is equal to that is equal to pf plus a dash pf plus a dash b is equal to kp that is equal to kp में लगा then kf kp pf then kf. This is equal to kf by b dash f. तो kf b dash f leave it, no need. kf लेने हमारा kp दरकार kp. Okay, so finally kb by a dash b dash. So this is equal to ab by a dash b dash equation 2. This is equal to minus f by pf minus f plus a dash p. This is equal to a dash b is equal to plus b. Okay, so finally okay minus f by b minus f. Okay, or that is equal to f by f minus b. Okay, so equation 1, this is equation 1. देखो a equation आसला a by a dash b dash, ये ap by a dash b dash also that is equal to ab by a dash b dash. Okay ना, तो ये ab by a dash b dash, ab by a dash b dash. Okay, तो ये ab by a dash b dash equation 1 equation 2. this is equation 2. बहुत लंबा अच्छी बात ध्यान देके सुनियो. तो ये इक्वेशन चेक करिवा therefore from 1 and 2. Okay, from 1 and 2 what we got एटा देखा दोस्तों. हां आदिटा अच्छी के बाबा 1 and 2 रे पासला. this is equal to minus u by b is equal to f minus b. तो minus uf plus uv is equal to vf. Okay, तो by uvf by uvf. Okay, तो u cancel, f cancel, तो finally minus 1 by b plus u v plus 1 by f is equal to what? b f 1 by u. तो 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. Okay, तो this is your proof. सरियला तो ये हेला तमरा सेकंड पार्ट बुझियला. तो एठी भी तमे जोड़े ट्रायंगल रा कंप्लीटली. तो थर्ड पार्ट एक्जेक्टली से वाला जोड़े ट्रायंगल लबो तो करिवो. मु ताको हबे एटा को पार्ट करी बुझेबी. से मिरर फॉर्मूला को मु आके राजी डिस्कस करली हल कॉमन रे ताको कोन पार्ट करके और बुझेबी. हला काना बहुत टाइम लागो. वो तीन पार्ट कर दवा, तीनटा छोट छोट वीडियो कर दवा बेटर हो. ओके, आज बेती की नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करिवा पूरा यही सेम टॉपिक को पार्ट रे अलग बुझेबी. ओके, रखुछ. यदि भल लागला ठीक ठाक सब्सक्राइब निश्चित करियो, शेयर करियो, लाइक करियो आ कमेंट जहाँ लिखा लिखो. ओके, एटा दुईटा दोचे ओडिशा क्वेश्चन बैंक रे जोड़ा आपटा अछि डाउनलोड करछि मु सेटा कथा भी देखिलो प्लस यूट्यूब रे देखि परिबो. दुईटा अछि सेठै बहुत रे हमें दरकार अछि जहाँ भी अछि कमेंट तमे लिखि परिबो, किछ असुविधा नै. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.